Hello students, I hope you might have watched the previous video in which we had dealt with the poem The Village Schoolmaster by Oliver Goldsmith. So this video is in continuation with the previous one. Let's take up today's lines. While words of learned length and thundering sound amazed the gazing rustics ranged around, and still they gazed, and still the wonder grew, that one small head could carry all he knew. See, in the previous video, I had told you people that villagers were very much awed by the knowledge of the village schoolmaster. They were very respectful towards the master, and for them, he was actually an embodiment of knowledge and experience. So, here again, same thing has been highlighted. Uh, like in the previous stanza, I had told you people that the villagers very much admired the quality of debating which was in the teacher. So here again the same thing is being highlighted, and the poet says that the village schoolmaster was a good orator. He could speak very great lines, or rather he could quote good lines, and his voice quality was also good. So the way he used to speak, whenever he used to deliver speech, or whenever he used to argue, his voice quality just surprised the rustics, the villagers who used to flock around him, who used to gather around him to listen to a particular debate. They were always full of awe for his uh, this capability. And still they gazed, and still the wonder grew. And whenever they saw the teacher doing some work, whether it was debating, whether it was measuring, whether it was teaching, whatever he was doing, it was always a source of wonder for the villagers, and they were always amazed at his knowledge and experience. And they used to think, how could such a small head of the teacher could have so much of knowledge, how could he hold so much of knowledge in his small brain? So what actually the poet wants to say is, the teacher was very learned, and he was always using his knowledge for the benefit of the villagers. And not only this, he never lost a chance to display his knowledge. So the villagers, the simple villagers, they always looked high, looked upon, they kept him on a very high pedestal, and they just looked him with admiration and respect. And especially his oration was, you can say, so good that people really got impressed by his speech. And they used to wonder, how could he be so knowledgeable, how could he hold so much of knowledge in his small brain? But past is all his fame, the very spot where many a time he triumphed is forgot. Now, these are the last lines of the poem. As I told you earlier, the poet has perhaps revisited his village where he used to spend his time in his childhood. So now there is no such teacher. Now everything is a part of history. People have left that particular place. That's why the poem, the longer poem from which this poem has been extracted, the title of that poem is The Deserted Village. So why deserted village? Because probably the villagers have left that place. The village has been abandoned by them. So he says, the poet says, but past is all his fame. Now there is no one to celebrate those things, rather those moments, because all those things that he had been describing up till now, all those things have become a part of history. The very spot where many a time he triumphed is forgot. And
spot, the village where the teacher used to impress the villagers, that particular place, which was rather a place for his victory, where everybody admired him, where everybody was awed by him, actually, now that place has been forgotten by the people, because now nobody is residing over there. People have left that village. So that particular place where the teacher once enjoyed, you can say, so good a reputation, now that particular place has been forgotten. It has been erased from the memory of the villagers, or rather not the villagers exactly, the people who were resigning, because that place has now been abandoned by them. Nobody is there, living in that particular place. So perhaps this is the thing that is being highlighted over here by the poet. So that's all about the poem. Let's have the whole thing in Hindi now. While words of learned length and thundering sound amazed the gazing rustics ranged around. जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गांव वाले टीचर के ज्ञान से, उसके बुद्धि से, उसके कौशल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ख़ास तौर से उसकी भाषण कला से, वक्तृता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो जब वो किसी बात पर विवाद करते थे, वाद विवाद किया करते थे, जो गुरुजी थे, जो टीचर थे, और जो उनकी गरजती हुई आवाज़ थी, उनकी आवाज़ बहुत बढ़िया थी, बहुत। देखिए, किसी भी वाद विवाद या भाषण को सुनने में तब मज़ा आता है जब बोलने वाला जो वक्ता है उसकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी हो, दमदार आवाज़ हो, जोशीली आवाज़ हो, तब हमें भाषण सुनने में मज़ा आता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ टीचर के अंदर थी। उनकी आवाज़ बहुत थंडरिंग थी, बड़ी गरजती हुई आवाज़ थी, और वो बड़े शब्द जो बहुत अच्छे चयन करते थे, बहुत बहुत चुने हुए शब्दों को वो इस्तेमाल किया करते थे अपने भाषणों में, जिसकी वजह से अमेज्ड द गेजिंग रस्टिक्स, जो रस्टिक्स थे, जो गांव वाले थे, जो गेज़ किया करते थे, जो देखा करते थे वहाँ खड़े होकर, रेंज्ड अराउंड, जो चारों ओर खड़े होकर उस वाद विवाद को सुना करते थे, देखा करते थे, वो हमेशा बड़े अमेज्ड हुआ करते थे, बड़े हैरान, बड़े प्रभावित हुआ करते थे ज्ञान और कौशल से। यानी कि जो टीचर थे, गुरुजी थे पोएट के, वो बहुत ही बढ़िया कुशल वक्ता थे, और उनकी उस भाषण कला से गांव वाले बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। And still they gazed, and still the wonder grew that one small head could carry all he knew. और वो जो गांव वाले थे वो उनको देखते ही रहते थे, यानी वो एक तरह से गांव वालों के लिए बड़े प्रेरणा का स्रोत थे, या कह सकते हैं कि आदर के पात्र थे। गांव वाले बड़ा उनसे प्रभावित रहा करते थे, बड़ा खुश रहा करते थे। तो उनकी इस कला को, जैसा मैंने पहले बताया, वो ज़मीनें भी नाप लिया करते थे, वो भविष्यवाणी भी कर दिया करते थे, वाद विवाद भी सुलझाया करते थे, भाग भी लिया करते थे वाद विवाद में, भाषण भी बहुत अच्छा दिया करते थे। तो उनकी इन सारे गुणों से गांव वाले बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और वो उनको बड़ी कह सकते हैं कि सम्मान की नज़रों से देखा करते थे, और बड़े हैरान हुआ करते थे उनकी इन क्वालिटीज़ को देखकर। और उनकी वो हैरानी इस बात पर बढ़ती रहती थी कि इतने छोटे से सिर में, इतने छोटे से दिमाग में इतना सारा ज्ञान कैसे समाया हुआ है। यानी उनके लिए तो टीचर जो थे वो एक तरह से सब चीज़ों के ज्ञाता थे, यानी उनके लिए तो सर्वज्ञ की तरह से हो गए। वो अपनी हर परेशानी के लिए, हर कह सकते हैं बात के लिए टीचर से डिस्कशन करने के लिए तैयार रहते थे, बात करते थे उनसे। तो उनको बड़ा हैरानी होती थी कि इतने छोटे से दिमाग में इतना सारा ज्ञान कैसे समाया हुआ है। But past is all his fame, the very spot where many a time he triumphed is forgot. ये हमारी कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कविता है ये गोल्डस्मिथ की बड़ी कविता द डेजर्टेड विलेज का टुकड़ा है। तो जो द डेजर्टेड विलेज है वो कविता पोएट ने ऐसी स्थिति में लिखी कि जिस गांव में उसका बचपन बीता था, वो बड़े होने पर उस गांव को वापस
वहाँ जाता है और पाता है कि लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया है, वो गांव खाली किया जा चुका है। तो उसकी यादें जो बचपन की जुड़ी हुई थी उनके ऊपर वो पूरी लंबी कविता आधारित है, जिसमें से ये विलेज स्कूल मास्टर जो टुकड़ा हमारे सिलेबस में है, ये जो हम पढ़ रहे हैं कविता, ये उसका एक टुकड़ा मात्र है। तो उसी चीज़ पर वापस वो वास्तविकता पर कवि आ जाता है, कहता है बट पास्ट इज़ ऑल हिज फेम, कि उस टीचर की, उस गुरु जी की, जिनकी अब तक क्वालिटीज़ उसने बताई इस कविता में, कह रहे हैं कि वो उनका जो फेम है, उनकी जो प्रसिद्धि है उन गुरु जी की, उन टीचर की, वो अब पास्ट हो चुकी है, गुजरे हुए ज़माने का हिस्सा बन चुकी है, अतीत का हिस्सा बन चुकी है। द वेरी स्पॉट वेयर मेनी अ टाइम ही ट्रायम्फ्ड इज़ फॉरगॉट, और वो स्पॉट, वो जगह, वो गांव जहाँ वो कई बार जीते थे, मैंने बताया था ना कि वो बहुत ज्ञानी माने जाते थे और बहुत सारे क्षेत्रों का उनको ज्ञान था। तो जो गांव वाले थे, जब वाद विवाद वगैरह हुआ करता था तो उसमें वो अक्सर जीता करते थे। तो एक तरह से वो गांव उनके लिए उनके जीत का क्षेत्र था, उनके जीतने की जगह थी। तो कह रहे हैं द वेरी स्पॉट वेरी वेयर मेनी अ टाइम ही ट्रायम्फ्ड, कि वो जगह जहाँ वो कई बार जीते थे, उन्होंने विजय हासिल की थी, इज़ फॉरगॉट, लोग अब उस जगह को ही भूल चुके हैं। यानी कि जिस जगह पर उन टीचर ने इतना लोगों को प्रभावित किया, लोग उनसे इतना ज़्यादा जुड़े हुए थे, वो जगह ही अब लोगों ने भुला दी है। तो मेरा ख्याल है कविता आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आप ध्यान से इस कविता को वापस से देखिएगा। आज के लिए इतना ही।